हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर सेक्शन में एक एग्जांपल दिए। इस एग्जांपल में राजू वेंट टू ए शॉप। ही बॉट 4 पेन्स इन रेड बॉक्स, 5 पेंसिल्स इन blue box. So Raju bought X red boxes and Y blue boxes. By buying these boxes, he got 3 extra pencils. Now how to represent all this? A box consisting of 4 pens. अगर एक बॉक्स में 4 पेन्स है तो राजू ने X रेड बॉक्सेस परचेज किया। सो टोटल कितने बॉक्स परचेज किया? 4x। एंड नेक्स्ट, अगर एक पेंसिल बॉक्स में 5 पेंसिल्स है तो he bought 5 blue pens. So total how many boxes he purchased? 5y. Total together means ये दोनों को ऐड करना है. So 4x plus 5y. And he told that 3 extra pens were free. So we can write it as plus 3. So totally from this example we can say that Raju bought, this is the total number of pens and pencils. So this is called as algebraic expression. And in this algebraic expressions, 4x, 5y, 3, these are called as terms. And x, y, these are called as letter numbers or variables. Now from this chapter onwards, we'll use variables instead of letter numbers. These letter numbers what we used in प्रीवियस क्लासेस. एंड 3, ये 3 को क्या बोलते गए तो कॉन्स्टेंट्स को बोलते. एंड नेक्स्ट, दिस 4 इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x, 5 इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ y. देयरफॉर 4 एंड 5, दीज 2 आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y. नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल दिए, आप खुद ये एग्जाम्पल कर लीजिए. और एक एग्जाम्पल दिए. नेक्स्ट, कमिंग टू दिस, इस एक्सप्रेशंस में ऑब्जर्व कीजिए, ये थोड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए. इन्हें में ऑब्जर्व किया तो यहाँ x वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन में y वेरिएबल है. सो इफ़ यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करें तो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 वेरिएबल है. So these are the expressions with one variable, either x, either y, or either z. Now in this expression, x square plus 5x plus 1, the highest power of x is 2. Power of x is 2 and here power of x is 1. Therefore highest power of x is, you can observe, it is 2. Similarly, from this example expression 5y cube plus y square minus 8, the highest power is 3. Next, one more example. इस example में आप देखेंगे तो the power of y is 1, the power of y is 2 and here power of y is 3. Therefore highest power is 3. And the quotient of y power 3 is 5. This is constant, this is quotient of y and quotient of y square. Quotient of y square यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते. Therefore quotient of y square is 1. So from these examples, ये examples observe किया तो हर एक algebraic expression में 1 variable use किया है. Such type of algebraic expression, it is having only 1 variable, it is called as one variable polynomial or univariate polynomials. यहाँ पे univariate means it is having 1 variable. अगर algebraic expression में only 1 variable है तो उसे univariate बोला जाता है और simply it is called as polynomials. यहाँ पे highest power ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहा जाता है. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री
3 है. So therefore degree of this polynomial is 3. Such type of polynomial is called as cubic polynomial. अगर polynomial डिग्री 3 होगा तो इसे cubic polynomial कहा जाता है. और अगर डिग्री 2 हुआ तो such type of polynomials are called as quadratic polynomials. अगर डिग्री 1 हुआ तो such type of polynomials are called as linear polynomials. यही है हमारा चैप्टर का मीनिंग. वेरिएबल नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को पॉलिनोमियल डिग्री 0 होगा क्योंकि 8 को 8 इंटू एक्स पावर 0 लिखा जा सकता है. यहाँ पे पावर 0 हुआ. देयरफॉर डिग्री इज 0 फॉर एनी कांस्टेंट. Such type of constants are called as constant polynomials. Exercise set 2.1 follows in the next video. अगर आपको इस वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.